Imagine this. You hide your income not in cash, not in lockers, but in your email servers, your trading platform, your cloud servers, and still think income tax cannot reach you. Well, think again. Welcome to the future of taxation where even your digital space is not beyond the reach. So today in this video, let's discuss about the most trending topic related to the Income Tax Act 2025, and that is your virtual digital space. And trust me, every student, every professional, and every taxpayer should understand this term, what this is, and what falls under the virtual digital space. So, exactly what is this fancy term? So, virtual digital space is a space where the transactions happen or the data exists, and it includes your email accounts, your cloud servers, your remote servers across the world, your encrypted communication, your social media handles, even if it is not present anywhere. So basically, if your money trails exist digitally, it is your virtual digital. So let us see where it gets interesting. तो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होता था? ऑफिसर्स यूज टू लुक फॉर योर कैश, योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर लॉकर्स. बट व्हाट इफ आपका डेटा किसी ईमेल पे है या किसी क्लाउड सर्वर पे है? द लॉ हैड अ ह्यूज गैप. द गवर्नमेंट सेड कि डिजिटल सर्वर भी ना, डिजिटल स्पेस भी एक प्लेस है. सो दैट मीन्स authorities can now access your social media handles, your email accounts, your cloud servers, your remote servers across the world. They can access it if the taxpayer is not coordinating with the authorities. So basically, अगर आपका data कहीं भी physically present भी नहीं है ना, then also authorities can access it under the new Income Tax Act 2025. और ये this move is huge because आज के डेट में देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स इन द मार्केट, एंड टैक्स इवेजन ऑल्सो हैव गॉन डिजिटल, एज इन मनी स्टोर होता है इन दी ऑफशोर अकाउंट्स, देयर आर इनक्रिप्टेड वॉलेट्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस, एंड द लॉ नीडेड टू कैच अप विद दैट. हेंस कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल स्पेस. मनी ट्रेल डिजिटली एग्जिस्ट है तो वो आपका वर्चुअल डिजिटल स्पेस के अंदर फॉल करता है. सो पहले क्या होता था? Tax used to follow where you are, but now tax follows where your data is, and it is a huge shift from the physical world to the digital world. If you found this video useful, follow me for more such updates.